Right? Yes, the meeting is being live streamed. Okay, so we are on now. Wonderful. So as I was just talking about, जैसा कि बस बात ही कर रहे थे कि आज के लिए कोई टॉपिक तो है नहीं, लेकिन जब भी कोई टॉपिक नहीं होता तो कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है, और एटलीस्ट आई नो व्हाट टू टॉक अबाउट. एंड सो टुडे, as I was going through some of the old registers and trying to sort them out, what came across to me each time I would open a register, and I've got it right in front of me because I'm going to be reading out some of those old guidances and sharing them with you, and then you will be sitting and doing your own workshop today. आज लिखाई पढ़ाई का काम है थोड़ा सा, इसलिए अपने साथ थोड़ा कागज पेंसिल लेकर के बैठेंगे और लिखना शुरू करेंगे. लेकिन जिस टॉपिक पे आज बात होगी वो है कहानियां, stories. Everywhere that we see stories, and yet we don't even recognize the stories. Oh no, this is my life. I have a child, I have a daughter, I have a job, I have a husband who's this. I have a mother-in-law who's that. And all of this is my life. And we don't recognize that each of these things, every part of this is just one separate story by itself. Your relationship with anyone and everyone and with yourself, simply a story. आपकी रिलेशनशिप है अपने बेटे के साथ, वो एक कहानी है. आपकी रिलेशनशिप है अपनी नौकरी के साथ, वो दूसरी कहानी है. आपकी रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जो कुछ भी बैंक अकाउंट के साथ, आपकी रिलेशनशिप आपके साथ बैंक अकाउंट के साथ भी है. क्यों है बैंक अकाउंट के साथ? क्योंकि जब भी कभी आपके बैंक अकाउंट का जिक्र आता है तो क्या आपके अंदर कुछ भी ऐसे इमोशन क्रिएट हो जाते हैं कि अरे ये कम है, ये ज्यादा है, बैंक अकाउंट है, काम नहीं कर रहा है, पैसे कम है, वगैरह वगैरह. जहां पे भी आपके इमोशन क्रिएट हो जाते हैं वहां पर एक स्टोरी है. Everywhere that you are getting emotions, in every role, every actor, it's just simply a story. And in a day, now you think about it, in a day, we have 20 stories playing out, 20 stories. And I've done a full webinar on this before, saying sign out from the stories, sign out from the stories. And we become a little bit more aware, The more we are looking within, we begin to recognize the stories a little bit more. The stories are always going to play out because everything on planet Earth happens through stories. यहाँ पर सब कुछ इन कहानियों के भरोसे ही, इन कहानियों के जरिए से ही यहाँ पे सब कुछ होता है. हमारे सारे के सारे जो इमोशंस हैं, सारे भाव जो हैं, वो इन्हीं कहानियों से बनते हैं. और फिर हम अपने आप को क्या करते हैं, हम अपने आप को दूसरी कहानी सुनाते हैं. हाँ, मेरे को सुन के भी तो आप अपने आप को दूसरी कहानी ही सुना रहे हैं ना. एक कहानी है कि नहीं, मेरे जीवन के अंदर कितनी मुश्किल है, मेरी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, मेरे को कितनी प्रॉब्लम है, और फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं, कहानी बदलो, कहानी बदलो, तुम मेरे से ऊर्जा लो, मेरी ऊर्जा के अंदर अलग दूसरी टाइप की कहानियां हैं, वहां पे कॉमेडी चल रही है, तो तुम मुझसे ऊर्जा लो, तुम्हें थोड़ी कॉमेडी की कहानियां सुनाई और दिखाई देनी नजर आएंगी. जब तुम थोड़ी सी उस कॉमेडी में घुसते हो, थोड़ा सा मजा आना शुरू होता है, तुम कहते हो अरे ये तो अच्छा चैनल है. लेकिन उस चैनल पे भी चल क्या रहा है? कहानी कहानी कहानी. तो कहानी का मतलब ये नहीं है कि हम कहानियों से परे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कहानियों को और ज्यादा पहचानने लगेंगे. फिर उस पहचान से होता क्या है, जब हम कहानियों को और ज्यादा अच्छे से पहचानने लगते हैं तो 2-3 पन्ने पलटते हैं किसी स्टोरी के. हम किसी दुकान पे गए, वो किताबों की दुकान है, अब हमको वहां से 2 किताबें खरीदनी है. हम जाके वहां पे और किताबों को देखना शुरू कर देते हैं, और हमको चाहिए कोई हल्की फुल्की मस्ती भरी किताब. तो हम क्या करते हैं ना, 2-4 पन्ने पलट के, और हमको पता चल जाता है कि उसकी स्टोरी कैसी है. तो फिर अगर वो हमें नहीं पसंद आ रही है, हम उस किताब को रखते हैं और हम किसी और दूसरी किताब को पलटने लग जाते हैं. एंड दिस इज व्हाट वी डू इन आवर लाइव्स व्हेन वी बिकम अवेयर. जब हमको स्टोरी दिखाई देने लगती है, व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ द स्टोरीज, then
and only then can we choose to play in some stories and to keep away the books of some other stories. So every story is going to create an emotion in you. Today, somebody came in the morning and they were like, okay, I need to talk to you. And I said, no, I don't talk to people one-on-one. You want to talk to me? Okay, go in the room, sit, talk to my energies, and the answers will come, because everything is a story. No, this is not a story. This is about my son. I said, I'm not interested. It's still a story. Your son is creating troubles for you. He says, no, no, not at all. My son is not creating a trouble for me. I said, no, the very fact that you want to come and discuss the son, that, okay, my son needs to go in that direction, he needs to do this, she needs to do that. The minute there are so many emotions getting created that you want to have a discussion with me, it just means that the sun is creating trouble for you. मेरे लिए तो ये सारे के सारे इमोशन जो है ना, जो हम जिसमें पूरे टाइम अंदर ही घुसे चले जाते हैं, sometimes of disappointment, sometimes of attachment, sometimes, वो सारे के सारे इमोशंस जो कि एंड में हमको 4 आंसू रुला देंगे, और वो आंसू शुक्राने के नहीं होंगे. तो अगर मैं 4 आंसू रोऊं और वो शुक्राने के आंसू नहीं हों, तो फिर फायदा ही क्या ना मेरी अवेयरनेस का. Why to call myself aware if I can't look at the story and I can't figure out which story I'm going to pay attention to today? I pay attention to stories of my liking only because I am in the aware game. If I wasn't in the aware game, I was as usual with everybody, running every story as usual. आपकी जिंदगी में 50 कहानियां चल रही हैं, मेरी भी जिंदगी में 50 चलती थी. And now from those 50 stories, I'm able to say, okay, that's a story. Let it run its course. I'm not going to put my attention over there. It doesn't need my attention. Let it run its course. This is a story about a disease. Okay, let it run its course. I am not going to pay attention to it. होगी तो वो सही, लेकिन मैं उसके ऊपर अरे अब इसका क्या करूं? What should I do with this? How can I get rid of this? How can I make this go away? I am not going to pay attention to it. I'm simply going to allow it to happen. I'm also not going to run away from it. My not paying attention to it is different from running away. When I don't pay attention to something, I'm fully aware that a story is happening and there is some energy of mine which I need to look into. I recognize that energy. Okay, this energy is of disappointment. And this story is playing out from disappointment. And then I say, okay, I'm not going to look at disappointment. I'm going to look elsewhere. So that is how I say, I'm not going to look at disappointment. I'm going to go into the gratitude frequency with some other topic. I'm going to put my attention somewhere. Why? Whatever I do, wherever I put my attention to, that manifests more and more. I have understood that there will always be 20 stories running, 10 will not be to my liking. So what? I have more stories that are to my liking. I will simply keep putting my focus over there. Earlier, when Meenal didn't understand how to process the stories, then 20 things are going okay. And that one thing that is not going okay, I will keep thinking about it and keep thinking about it. इसका क्या करूं? How should I deal with it? ये कैसे जाएगा? ये कितना तंग कर रहा है? ये तंग करना बंद क्यों नहीं हो रहा? I will put all my focus on that one thing that is right now not working out. Is that necessary? No, it's not. But that's normally where the focus goes when we are unaware. But then when we become aware, we can see the process. We can see where the focus is going. And now as the focus goes, I can gently just bring it right back and say, okay, we looked at it. We understood what frequency this is. And now we are going to choose to look at some other frequency. My favorite frequency, all of you know it. My favorite frequency, no, it's not Meenal frequency. My favorite frequency is gratitude frequency, but that is in part, in huge parts, it already exists as part of the Meenal frequency. Because what is Meenal frequency? It is just a combination of every frequency that I am collecting. And so I collect a lot of gratitude frequency
I tune a lot into the gratitude frequency, because that I find is the best way to change everything, to change your outlook towards that problem, to change the issue, and then the issue goes away on its own, because now you no longer think that it's a story of a whatever other issue it was. It's an issue at all. It's a problem at all. I just simply stop to look at it as an issue. I change the story. And so I constantly ask you as well, change the story, change the story, come to gratitude with it. But if you can't come to gratitude with it, go elsewhere. Take a look at another story, pay attention to another story. There are so many stories happening in your life where you can be in gratitude. तो शुक्राना की तरफ जब हम नजर करते हैं तो ये कई सारी स्टोरीज जो हैं जिनके अंदर हमको चै चै पै पै सुनाई दे रही है, वो चै चै पै पै अपने आप से हमको बाहर हो जाती है, हमारे दिल से बाहर हो जाती है। सबसे पहले दिल से बाहर होगी। वो जो चै चै पै पै है ना, वो सामने कई बार मैनिफेस्ट हो जाता है। मैनिफेस्ट हो गया, अब क्या करें, अब ये तो हो गया, अब क्या करना चाहिए, ये इसका तो डर था और जिस बात का डर था वो ही तो हो गया। ठीक है ना, जो डर था उसने ऑलरेडी अपना मैनिफेस्टेशन दिखा दिया, वो तो प्रत्यक्ष होके आपके सामने आ गया। अब आप उसमें से घुस के और अंदर घुस के और डर निकालेंगे, या आप उसके अंदर की तरफ देखना छोड़ के और कहीं और पे किसी और जगह अपनी नजर डालेंगे, वो तो आप ही के ऊपर है ना। पर आपको ये पता तो होना चाहिए, और यहीं पे आपकी जागरूकता, आपकी जो जागृत अवस्था है, ये यहीं पे आपको दिखलाएगी कि आपने फ्रीक्वेंसी की तरफ देखा या फ्रीक्वेंसी में डुबकी लगा दी, आपने इमोशन की तरफ देखा या इमोशन की तरफ डुबकी लगा दी। तो एक बहुत पुरानी जो मेरे पास क्या कहते हैं, कहाँ से ही तो पता नहीं निकल के आई, ये बहुत पुराना, ये आई थिंक 2018 का या 2019 का। तो सबसे पहले तो ये निकल के आया और उसमें ये था, What story made me cry today? What story made me cry today? It was a story of old hurt, old wounds, old ways, old patterns. आपको पता चल रहा है ना कि ये पुराना रजिस्टर है, क्योंकि अब मुझे ना इसको देख के बहुत हंसी आ रही है। तो खैर, ये जो कहानी है ये पुरानी यादों की, पुराने दुखों की, पुराने घावों की, पुराने तरीकों की, और पुराने जो बार बार हमारे पैटर्न रिपीट होते हैं लाइफ में, वही चक्री जो बार बार घूमती है, ये कहानियां मुझे आज रुला गई। ये कहानियां मुझे आज रुला गई। ये मेरी बहुत पुरानी गाइडेंस है। बैठी होंगी मैं कभी किसी चीज को लेके रोने के लिए, और ये गाइडेंस आई। तो अब मेरे से मणि ने सवाल किया, Are you going to take these into the future? Are you going to take these into the future? और उस वक्त पे मेरा जवाब था yes, because I don't know what else to do to release them. देखो, उंगली बाहर की तरफ थी, उंगली बाहर की तरफ थी, और मैंने कहा कि नहीं, उसने घाव दिया, उसने ऐसा किया, उसने मुझे दर्द दिया, उसने मुझे तंग किया, उसने मुझे उदास किया। ये सारी की सारी उंगलियां उस पर, उस पर, उस पर, और उन सारी कहानियों के बीच में बैठा कौन है? उन सब के बीच में बैठी मैं। तो उन सब कहानियों के लिए जब मणि ने बोला, क्या तुम इनको अब आगे भी लेके जाने वाली हो फ्यूचर में? एंड आई सेड हाँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं और क्या करूं टू रिलीज देम। मुझे पता ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू टू रिलीज देम। नाउ प्लीज नोट कि उसके बाद से बहुत कहानी आगे बढ़ चुकी है मेरी, एंड सो आई टोटली नो। और वो आपको बार बार बतलाती रहती हूँ कि अगर वो रिलीज नहीं हो रही हैं तो ये उंगली कहाँ जाएगी? ये उंगली यहाँ आएगी, और कहानियां थोड़ी और रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। बट दिस इज एन ओल्ड स्टोरी। सो आई एम उस दिन रोई होंगी किसी बात पे। एंड देन व्हाट डिड आई डू? I actually just sat down, and over here I wrote Om Mani, Om Mani, Om Mani, because I don't know what else to do. तो जब इतना तो पता है कि जब सारे रास्ते ऐसे बंद से नजर आए, कुछ खुलता ना नजर आए, so I know that I only have to chant Om Mani. That is where all my guidances come from. That is where all my answers come from. So I must have chanted Om Mani, Om Mani, and as I was chanting,
I also wrote a few of them. So Mani then asked me after some time, he said, oneness, where is your oneness today? Where is it today? And I said, it is replaced by hurt. It is replaced by hurt. या तो oneness होगी और या फिर आपके सेपरेशन होगा, अलगाव होगा, और अलगाव में तो दुख होगा, अलगाव में तो हर्ट होगा, ठेस होगी, दिल को लगी होगी, दिल के टुकड़े हजार होंगे. So when I sit in this separation, then I'm going to feel the hurt. And at that time, I can either be in oneness or I can be in two-ness. So in this moment, when I was sitting with tears of sadness, then where am I? I'm not sitting in oneness, because when I sit in oneness, the tears are only of gratitude. And so if something is making me cry, then of course I have to look within to see this is separation. And so Mani asked me, where is your oneness today? And I said, oh, it has been replaced by hurt. And so then he gave me the answer, and it was just simply whoever was giving me trouble that day. And I said, I am happy to release, and look at the words here, they are so beautiful. I am happy to release your body to the ashes. मैं तुम्हारी बॉडी को ashes में, राख में डालते हुए सुख में हूं. मैं तुम्हारे शरीर को राख में डालते हुए सुख में हूं. I am happy to release your body to the ashes. The next line, I am happy to release my body to the ashes. जब शरीर गया तो बाकी बचा क्या? बाकी बची हमारी ऊर्जा. और कितने ही प्यार से हम कितनी ही बार अब तो जानते ही हैं कि जब तक शरीर से चिपके रहेंगे, till the time we are stuck to the body, till the time we are looking at this 1% body, what will happen? Constantly, it will be love that is conditional. Love that is conditional. But as soon as you are able to let go of the body, and then you are able to see the other as energy. And then when you let go of your body, you are able to see yourself as energy. When energy is with energy, what is the play that is going to happen then? Only unconditional love, because the attachments, the expectations are only from the body. And so the answer came in just this one line. I am happy to release your body to the ashes. Many of you will remember, it was a long time ago that I gave that tool of killing expectations. And that is to say, kill everybody that you think you love. Because if you think you love them and there are tears of sadness, if you think you love them and you are going to cry at their death, then right now you don't even love them. You are simply holding yourself to attachments. And attachments have a beautiful link to attachments, expectations, and hurt. And hurt will make you cry. So here you are. If you are ready to experience joy, more joy, then all that you have to do is to understand that this body is simply being given to the ashes right now. So I am happy to release my body to the ashes, because again, so much of attachment and expectation I have from myself, from what my life needs to look like, from how my life should shape up to be. And when that doesn't happen, again and again, what do we sit with? We sit with so much sadness. That sadness coming from hurt, that hurt coming from expectations, that expectation coming from attachment to our own body as well. So here we go. I am happy to release my body to the ashes. I am energy, you are energy. I am energy, you are energy. This answer I must have probably got 100th time since then. And each time I understand, I sit with a journal each time to ask, okay, this story, what do I need to do now? The answers don't change. Many of you come to me each time saying, okay, I worked on this person for 400 days and this person is still giving me a problem. Now what do I need to do? Oh, well, the person is only there still in that same role to show you that still the work remains.
The work remains on you. If you give away this actor, that's perfectly fine. There are many ways to give away a physical actor. And then when you give away a physical actor, have you changed your energy? No, you haven't. And so if you haven't changed your energy, what will happen? Just simply somebody else will pick up that same role. Somebody else will just bring those same emotions to you. Okay, so that was my story of a long time ago. And when I must have been sitting in some hurt, some attachment, some sadness, some tears filled with sadness. So I spoke about ki uski, us din ki story ki. Why did this even come up? Because today, nothing happens by fluke, nothing happens by coincidence. And today, as I picked up two registers, I didn't have anything to talk about, but always some topic will come up. I can always talk about the 5 people that came to meet me in the week, because every day stories are getting created for me. Okay, my new scarf is running off. Okay, so the stories are getting created for me. But as I was just picking up 2 registers, and in both of them, the word story was very prominent. And so I said, okay, I've talked about this before, but then I've always talked about everything before. So apparently it's come for a deeper layer of unraveling of stories, of looking into stories and signing out from them. So now I'll give you a couple minutes, and we are going to, again, it's a guidance. I must have again sat and taken this guidance at another time, but this one can almost be converted to a tool. And so I'm going to try and make a tool out of it. And then you people can simply look at everything that's happening in your life right now. So, sabhi log ek ek kagaz, pencil, notebook le karke aur baith jaएं, और मैं 1 मिनट देती हूँ, और उसके बाद में हम आज ये टूल करेंगे बैठ के, जो कि है कि हम कहानियों से खुद को कैसे अलग करें। इन सारी कहानियों के बीच में जिनमें हम बैठे रहते हैं, वो कौन कौन सी कहानियां हैं जो अभी पहचाननी बाकी हैं। So many times as the stories play out, we can see it at a very superficial level, but we don't really still make the effort to get into them, to release them. So hopefully we'll be able to look at those stories in a little bit more detail today, and then to be able to release some of them. Why do I say some of them? Everything is simply a layer. So some will get released, and then there will be another webinar 2 years later, and then you'll release some more. The story continues. We are just simply today not saying that there won't be stories after this, but the stories of choice can be picked up by us. And the stories that we wish to let go today can at least be observed, because the first step of letting go is not to run away from it. यहाँ पे स्टोरी छोड़ो और भाग निकलो। वो हम जैसे ही किसी भी स्टोरी को छोड़ के भागते हैं, वो स्टोरी हमारे पीछे पीछे भागती है। तो इसलिए स्टोरी को भागने से, स्टोरी को छोड़ के भागने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने से। सो टुडे द टूल दैट वी हैव, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द स्टोरीज अराउंड अस टुडे। Okay, so I'm going to start now. I'm just simply reading out this. So I'll give you some of the stories which exist in all our lives, and then you will take down that topic. And then as you take down that topic, whatever thoughts come to you about your own story, let us say the first topic is body. Okay, and then I will say the word body, and then whatever thoughts come to you about your body, you will simply write them down. You will just simply write them down. Okay, so body. Okay, so my neck hurts a lot. I think I have a problem with my pain in the knee, or my body is fat, it's going to give me problems, or now I'm something or the other. Whatever, with the body, any associated stories that you have in your mind, we are simply going to do this tool to identify. Okay, so I hope all of you by now have a notebook, pen, pencil, all of that stuff in your hand. And now we will be moving forward. So wait, हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए, तो अब मैं आपको कई सारे शब्द दूंगी,
और वो जो सारे शब्द हैं वो एक एक करके आपको एक शब्द दूंगी, और उसके बाद उससे जुड़े हुए जो कुछ भी आपके पास विचार आते हैं, जो कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए मैंने शब्द दिया शरीर, और आपको उस शरीर से, आपको अपने शरीर से जुड़े हुए कई सारे विचार आए कि अरे ये दुखता है, ये ठीक नहीं होता, वगैरह वगैरह, इसकी तो ये तो लंबी बीमारी है, वगैरह वगैरह, जो भी आपको शरीर से जुड़े हुए जो भी विचार आएंगे, तो आप उनको बस एक हल्का सा नोटेशन, लंबे लंबे चिट्ठे लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बस ऐसा कुछ लिखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपने शरीर के बारे में क्या सोच के और क्या लिख रहे थे। तो वो आप लिखेंगे। मैं इस तरीके से शब्द देती चली जाऊंगी, थोड़े ज्यादा शब्द हैं लेकिन उनको देती चली जाऊंगी, और आप उससे जुड़े हुए, अगर आपसे उससे जुड़े हुए कोई भी विचार हैं तो आप उनको लिख लेंगे। अगर कोई विचार नहीं है तो उसको खाली छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि कुछ लिखना ही है। हो सकता है कि पूरा की पूरा जो पन्ना है वो एकदम खाली ही जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात। लेकिन अगर कोई भी कहीं पे भी कोई कहानी है तो फिर उसको हम आज देख पाएंगे कि कौन कौन सी कहानियों के अंदर अभी तक हमने यूं गांठें बांध के रखी हुई है, क्योंकि जहां पे भी गांठ बंधी हुई है उसका तो एक ही काम है, रोड़े अटकाना हमारे दिल में। तो आज हम इस दिल को थोड़ा सा और खोलने की कोशिश करते हुए, okay everyone, so now that we are, oops, what did I do? I'm going to move to another view. All right, so now we move to starting out. तो सबके पास कागज पेंसिल होगा। पहला शब्द है बॉडी, शरीर, बॉडी शरीर। तो जैसा कि मैंने कहा कि शरीर से जुड़े हुए कोई भी, दूसरा शब्द है उम्र, एज, उम्र, उससे जुड़े हुए कि अरे मैं तो अब इतनी बड़ी हो गई, मैं इतना बड़ा हो गया। और फिर बड़े से ना हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं कि अब ये तो हमारी जिंदगी में होगा नहीं क्योंकि हम तो बहुत बड़े हो गए, अब तो उम्र निकल गई, अभी तो उम्र आई नहीं, वगैरह वगैरह। सो एनीथिंग विद एज, एज। द थर्ड वन इज इलनेस, बीमारी, कोई भी बीमारी, शायद आपको हो और शायद बीमारी ना हो, लेकिन आप उसके बारे में बहुत सोचते हो। किसी और को हो आपके घर में और आप उसके बारे में बहुत सोचते हो। कहीं पे भी बीमारी शब्द यूज होता हो और आपको यूं डरा के चला जाता हो, तो आप उस बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने विचार वहां पर लिखिए। ये कहानी है जिसमें आप अभी अंदर घुसे हुए हैं। वो जो बीमारी की कहानी आपकी है उसके बारे में आप दो शब्द लिखिए वहां पे। illness, so illness too. So all of these are stories, and I'm just simply teaching you how to recognize the stories, how to recognize that all of this, what we think, no, no, I have this illness, I must go to the doctor, I must treat it in this way, I must do this, I must do that. This is a story. This is a story in and around you. So simply write 2 lines for that story that you have about illness. फूड, खाना, खाने को लेके क्या कहानी, ये खाना अच्छा नहीं है, इस दिन ये खा लिया तो ऐसा हो जाएगा, रात को ये खा लिया तो ऐसा हो जाएगा। दिस फूड is not religious on Tuesday, that food is good on me, that food doesn't suit me. All of these stories, खाने के बारे में क्या स्टोरी है। वाटर, खाने के साथ साथ वाटर, पानी, पानी के बारे में क्या क्या कहानियां हैं। अरे ज्यादा कहानियां, ज्यादा पानी पिए तो फिर ऐसा होता है, कम पानी पिए तो ऐसा होता है, दिन में मुझे इतने गिलास पानी पीना जरूरी है, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो वाटर, how many glasses is it healthy to drink, how many glasses is not a good thing to drink, this is too less, this is too much. Stories, just simply whatever thoughts you have about this topic of water.
नीड्स, तुम्हारी जरूरत, तुम्हें क्या क्या जरूरी है, ऑल ऑफ दिस इज नेसेसरी फॉर मी इन माई लाइफ। 3 टाइम का खाना जरूरी है, बाय गॉड वो भी कहानी है, वो भी कहानी है कि 3 टाइम का खाना जरूरी है, लेकिन ये हम अपनी जरूरत मानते हैं, नहीं ये जरूरी है वो जरूरी है। सो वट एवर इट इज दैट यू आर लुकिंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ नेसेसिटी, योर नीड, विदाउट विच सस्टेनेंस इज नॉट पॉसिबल, just एक दो line. I know that there must be many which qualify under that need, but whatever comes first to mind, जो कुछ भी अभी पहले 1-2 मिनट में ध्यान में आ जाए, बस वो लिख लें, आज के लिए उतना ही काफी है। तो हमारे लिए क्या क्या जरूरत है, क्या होना जरूरी है हमारी लाइफ में, जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं, दैट नीड, दैट नेसेसिटी इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। वो जरूरत, उसके बारे में जो कुछ भी अभी आपके पास आए लिखिए। फैमिली, गृहस्थी, फैमिली, फैमिली में क्या होना जरूरी है, किसके बिना जिंदगी अधूरी है, कहाँ पे ये काफी नहीं है, फैमिली को लेकर क्या काफी नहीं है। तो फैमिली के बारे में जो भी 2 विचार आए उसको लिखिए। Regarding family, whatever makes a complete family, what in your family gives you, and some of these will be repeats, but some of them will come at a different word, whatever comes to mind। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने आप से वो विचार आएंगे, उनको लिख लेना। और अगर विचार नहीं आ रहे तो just sit and listen to me doing nothing। okay, bonds, relationships, bonds, relationships, तुम्हारे रिश्ते, रिश्तों के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, कौन से रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, कौन से बुरे चल रहे हैं, किनके अंदर काम अभी बाकी है, कौन से तुम्हें दुख देते हैं, कौन से सुखी करते हैं। रिश्तों के बारे में जो कुछ भी अभी सामने आए, जो 2 शब्द सामने आए, your relationships, your bonds, your relationships with people around you। If the only thing that comes is okay, your bond with yourself, then whatever comes, you just simply write in a free flow, likhte chalo। Responsibilities, responsibilities, कर्ता भाव, जो तुम्हारे कंधों के ऊपर जो तुम्हारा भार है, किस किस चीज का भार तुम्हारे कंधे पे है, all the responsibilities and the burdens that you carry on your shoulder। You are the only bread giver, or you're the only bread maker, or you're the only bread eater, whatever it is that comes in terms of responsibilities, put that down। तुम कौन हो, तुम्हारे ऊपर क्या क्या, तुम्हारे कंधे के ऊपर क्या क्या भार हैं, उनके बारे में कुछ लिखो। जॉब, जॉब, योर वर्क, तो काम के बारे में कुछ भी सामने आए, काम अच्छा है, बुरा है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं पसंद आ रहा, छोड़ना है, रखना है, जो भी तुम्हारे पास इस तरीके से विचार आए तो तुम वो लिखो। काम के बारे में, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, कितने ही काम को लेके अगर चाहते हैं जो कि अभी तक कवर नहीं हुई हैं, उनको लिखो। काम की सारी चाहतों के बारे में लिखो, जो काम है वो पसंद है, नहीं पसंद है, कैसा है, कैसा नहीं, उन सब के बारे में जो विचार आए लिखो। और काम से ही जुड़े हुए गोल्स, क्योंकि कुछ तो आपने अपने जीवन के अंदर अगर गोल बना के रखे हैं, this should happen, that should happen in 2 years, I should be in this position, in 2 years this should happen to me, whether it is work related or home related or your children related, कि 2 साल के अंदर मेरे बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। If you have goals in your mind about anything, any of those goals, please write them। लक्ष्य कुछ भी अगर आपने अपने लिए बना के रखे हुए हैं कि 2 साल में तो ऐसा होना चाहिए और 5 साल में ऐसा होना चाहिए, तो उन लक्ष्यों के बारे में लिखिए। ये तो पूरा प्रॉपर टूल है, ये लंबा चलने वाला है। तो achievements, achievements, whatever have been your achievements,
whatever achievements you've created for yourself in the past, whatever achievements you are sitting in with today, and what are the, what are the achievements that you still wish to get. That will probably be a part of goals. But all the achievements that you are sitting with, whether they are enough, not enough, what do they create with you? If the achievements simply bring in your mind a comparison that, oh, my achievements are nothing as compared to somebody else's, then write this down. This is your story. These are stories. All of them are stories. Each line of yours is a story that you are still involved in. Achievements, उपलब्धियां, तुमने कितनी उपलब्धियां कर ली, क्या नहीं कर पाए, कितना तो रह गया, और मन के अंदर यही कि अरे ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, या फिर कि ये देखो कितना सारा कर लिया। उपलब्धियों को लेके जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आए उसको लिखो। अगर तुमको अपनी उपलब्धियां कुछ ना नजर आए और सामने वाले को देखकर तुमको अरे उसके तो इतना ज्यादा, मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने तो इतना किया, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया, उसके बच्चों ने इतना किया, तो ये सारी की सारी जो आपके मन के अंदर जितने भी भाव उठते हैं उपलब्धियों के बारे में सोच के, अपनी या किसी और की, तो उन विचारों के ऊपर जरा ध्यान दीजिए। ये सारी की सारी कहानियां, ये आपके जीवन की कहानियां हैं जो मैं बैठ के लाइन बाय लाइन आपको लिखवा रही हूँ। फेलियर्स, उपलब्धियां आ गई तो फेलियर्स कितना दूर रहेंगे ना। तो फेलियर्स, क्या क्या नहीं हो पाया, काश काश कि ऐसा होता। ये जो पश्चाताप की जो, जहां पे अरे मैंने ये नहीं किया, ऐसा किया होता तो बात ही कुछ और होती, वैसा किया होता तो ये पूरे की पूरे जो ऐसा होता तो शायद वैसा होता तो वो सारी कहानियां जो आपको मन में नजर आए। Everything about failures, wherever you've considered yourself as a failure, if that story still comes to you, please write it down. That story where you think you could have, should have, would have, must have, whatever, done something differently, and you didn't. And all of those, all of those baggages that you're still carrying with respect to your failures, please write them down. Okay, now we move outward a little. सोसाइटी, सोसाइटी को देख के, सोसाइटी के बारे में आपके पास क्या क्या विचार है? ये सोसाइटी है तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती है, ये तो हर जगह से मुझे रोक लेती है। There is such a limited society we live in. This is such a closed society we live in. People say this and people do this and people think that, and this is how the society doesn't let me live my life. If you have such stories, please write them down. Any stories, all your thoughts are all pointing towards stories. सारे के सारे thoughts आपके, विचार आपके, वो सब कहीं ना कहीं कहानियों से बन के आ रहे हैं। और आज हम बस यही कर रहे हैं कि हर कहानी को देख जाएं। सोसाइटी के बाद नाम, name and fame. You'll pick them together. Name and fame. आपका नाम, आपकी ख्याति। जरूरी नहीं है कि ख्याति देश के लेवल पे हो सकता है कि आपका नाम जो है आपके पड़ोसी किस हिसाब से लेते हैं, आपके चाहने वाले, आपको ना चाहने वाले आपका नाम कैसे लेते हैं, आपकी ख्याति कौन से तरीके से आपके जानने वालों के बीच में है। What is the name and fame that you hold on to? And then how is it that your name is taken? What do you think how your name is taken? When your friends think of you, when people who love you think of you, what do they think, or what do you think they think? Because this is all about you. And what do you think that people, the ones who don't like you, how do they define you? Because that too is your story. You've created a story in your mind that, oh, this is how those people will think like that about me because, and some story after that. But still, it's just a story. So likhte chaliye. Name and fame. Name and fame is what we were on last. And then, of course, the cutest one out of them all, money. Itni der se aaya. And I can almost see itni der se kyun aaya, because this was a
This was something I was doing for myself, right? तो मेरे लिए money doesn't create emotions in me for a very long time. So money बहुत नीचे आता है. लेकिन ये बाकी की सारी चीजों के अंदर, now the list has money. So all of the emotions that you might have when you think about money, and money has all of these aspects: giving, receiving, taking, stealing, all of those things, right? So there are too many aspects. Whatever comes to mind today, whatever will come, probably the one that has been in your conscious awareness for the last couple of days, if there's been a problem with money, if there's been too much money, if there's been a shortage of money, whatever it is that you can think of money right now, in the now, whatever your thoughts are. पैसों के बारे में जो कुछ भी आप लिखना चाहें अभी, जो पैसों के बारे में बहुत प्रोग्राम होते हैं, ना तो देते बनता है कईयों से, ना लेते बनता है, ना मांगते बनता है, ना चोरी करते बनता है. तो पैसों के बारे में हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो हम सब में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इस वक्त पे अगर आपको कुछ भी सूझ रहा है तो फिर आप मुझे अभी इस वक्त लिख लीजिए. मुझे नहीं, अपने कागज पेंसिल पे इस वक्त में लिख लीजिए. धर्म, religion. What all emotions come up as you think of religion? Your religion, what emotions? Some other religion, what emotions? And a religion that you love and a religion that doesn't quite appeal to you. तो उनके बारे में क्या विचार है? ये अच्छा है, ये बुरा है, बस सोचिए मत, लिख डालिए. उसके बाद नहीं ये कैसे, ये तो अच्छा नहीं है, तो मैं सोचता हूं. आप सोचते हो ना, तो ये कहानी आपकी है. Whatever you think about religion is also a story that you have created for yourself. This is a good religion, this is a bad religion, this is the worst religion on planet Earth. Whatever it is that you think about anything related to religion, it's a story that you are living by. It's your story. So right now, we simply write down that story as well. रूल्स, कैसे रूल्स बनते हैं? कई सारे हमारे लिए कितने ही रूल बनाए जाते हैं, कायदे, नियम. रूल्स के बारे में आपके क्या विचार आपके सामने आते हैं? नियम नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन संभालते हैं तो, नहीं तो पूरी फैमिली मेरी खराब हो जाएगी. नियम तो बहुत जरूरी है, नियम के अनुसार से चलना चाहिए, नियम हमारे लिए बने हुए हैं. ये कई सारी चीजें हम ऐसा सोचते हैं, इसलिए आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स. What do you think about rules? Rules are so necessary. If I didn't have rules for my children would never sleep. They would only watch television. They would never study, blah, blah, blah. They would be a failure. They would do this, they would do that. Stories. These are your stories. Let's take a look at them today. The word is rules. What comes to you? Should rules be there? Should rules not be there? Should rules just be let go? Do your children follow rules? What do you feel when your children don't follow rules? Just write it down. Just write it down. These are stories. Okay, and then right and wrong. Everything that you consider right and everything that you consider wrong. मैंने अभी बोला ना, चोरी नहीं होती लोगों से. डेफिनेटली लिख लो वहां पे कि मीनल ने ऐसे बोल दिया, कितना गलत काम करवा रही है हमसे, चोरी करने को बोल रही है. So right and wrong. All your thoughts about what makes right and wrong in your life. What do you think about yourself as? Are you mostly right? Are you mostly wrong? What do you feel about others doing right things and wrong things? What emotions? Well, don't write the emotions right now because that's the next part. But what thoughts do you have when you see people doing wrong things and going the wrong way? What emotions? Why do I keep saying emotions? What thoughts about those people? See, this is what happens when I come unprepared and I'm going by an old guidance to myself. Okay.
So I hope all of you are done for now. We'll pause. I will take a look at, I'll read out some of the rest of the guidance, and then we'll come back to part B of this exercise. Hope you're all done with the exercise. I see somebody writing something on chat too late. Acha, masti batorne aate hain. Okay, that was Anita right at the beginning. Okay. All right. So, तो जब हमने ये सारे के सारे लिखे, तो उसके बाद मणि जी ने हमें क्या बोला? मणि जी कहते हैं, all stories have one purpose. All stories have one purpose. You know, right up at the top, you saw so many different stories about yourself, so many stories that you might have written for yourself. And now Mani says all stories have just one purpose. And that one purpose is to create emotions in you. To create emotions in you. सारी कहानियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है. एक ही उद्देश्य. इतनी सारी कहानियां हम लिख गए. 15, 20, 40, 50. हम कहानियां लिख गए और उन सबका उद्देश्य एक ही. और वो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है हमारे अंदर भाव बनाने का. भाव बनाने का. कौन से भाव, कैसे भाव, अच्छे भाव, बुरे भाव, उससे कोई ताल्लुक नहीं है स्टोरीज का. स्टोरीज का सिर्फ एक उद्देश्य कि उनको स्टोरीज के अंदर घुसने से हमारे अंदर इमोशन बनते हैं. हमारी भावनाएं जो हैं वो और बढ़ती हैं और बढ़ती हैं. और स्टोरीज का सिर्फ एक ही उद्देश्य है. दे हैव ओनली वन पर्पस. बस इन्हीं भावों को बढ़ाने का. इमोशन is the basic ingredient and the end outcome. कितना ही प्यारा. इमोशन जो है वो ही तो स्टोरी के अंदर पड़ता है बनाने के लिए. वो बेसिक इंग्रेडिएंट है. वो जो चीजें उस डिश के अंदर पड़ रही है ना बनाने के लिए, वो जो खाना पक रहा है, वो जो कहानी पक रही है, उसके अंदर मेन चीज क्या डलेगी? वो डलेगा इमोशन. एंड उसके बाद मणि क्या कहते हैं? इमोशंस आर द बेसिक इंग्रेडिएंट एंड द एंड आउटकम बोथ. और जो तैयार हुआ ना वो भी बस यही. कितनी ही बार तो मैं आपको यही बात बार बार बतलाती हूं नहीं कि जिस कहानी के अंदर आप घुसे, आप बस देख जाइए कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं. आप जब देखेंगे कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, वो उस कहानी का बेसिक इंग्रेडिएंट है. तो ये जो गाइडेंस है, जिस दिन ये आई, जिस दिन ये पता चला, उस दिन मणि बस यही बता रहे हैं कि वो जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उस कहानी का, उसको तो पकड़ो कि तुमने उसके अंदर कौन सा अपना इमोशन डाला. और फिर जो कुछ भी हम डालते हैं, उदासी डालेंगे. उदासी डालेंगे कैसे? अरे हमारे एनर्जी के फील्ड के अंदर बहुत सारी उदासी भरी पड़ी है. तो वो जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो हमारी एनर्जी से निकल के आता है और डल जाता है इस जो पकम पकाई हो रही है, जो खाना पक रहा है, जो इतना स्वादिष्ट व्यंजन पक रहा है, जो कहानी पक रही है, उसके अंदर में वो बेसिक इंग्रेडिएंट पड़ता है और वो कहानी उसके साथ बनती है. उसके साथ बनती है. तो बेसिक इंग्रेडिएंट आया हमारी ऊर्जा के फील्ड से. और फिर एंड आउटकम जो नतीजा है वो क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा उसी इमोशन का और भारी और डीप. वो ही पक पका के थोड़ा और भारी हो जाएगा, थोड़ा और डीप हो जाएगा हमारा वो इमोशन. और फिर वो कहाँ जाएगा? जाके बैठ जाएगा हमारे एनर्जी फील्ड में. सो व्हाट इज इट दैट इज गेटिंग क्रिएटेड? हाउ ब्यूटिफुली मणि सेज टू अस, द बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर these stories is the same as the end outcome. And the basic ingredient is coming from our energy field. Our energy already holds that basic ingredient. And that is why this story outside is getting created. And so if our basic ingredient is sadness, the story outside will hold that sadness. That basic ingredient will be part of that story. But what will you experience? You will experience even deeper, even more sadness, because the basic ingredient and the end outcome are the same frequency. We just simply deepen the experience a little bit more, collect a little bit more of the same frequency. And that's how our entire life
runs by in stories. इसी तरीके से पूरी जिंदगी कभी इस कहानी में कभी उस कहानी में भावनाएं बटोरने में बीत जाती है. अब यहां पर मणि पूछते हैं मुझको, अभी तो बताते हैं, what you put in will be the end product. What you put in will be the end product. So as you weave your story now, what are you putting into it? ये जो सारी हमने कहानियां अब हमने देखी, ये कौन सी कहानियां हैं, अब इनकी तरफ वापस जाते हुए और देखते हुए कि as you weave your story, जैसे जैसे तुम ये अपनी कहानी बुनते चले जा रहे हो, देखो तो सही कि जो कहानी बुनी जा रही है वो तो आ गया तुम्हारा बेसिक इंग्रेडिएंट, तुम्हारा जो अंदर डालने के लिए वो क्या है ना, इतना वो व्यंजन के अंदर क्या पड़ते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, खैर तो इंग्रेडिएंट्स तो रेसिपी के अंदर कितने ही आई एम सॉरी, आर यू सजेस्टिंग मी अ हिंदी वर्ड मेघा? या मसाला मसाला तो स्पाइसेस होते हैं, मसाला इज नॉट इंग्रेडिएंट्स, बट एनीवेज, सो एज यू वीव सामग्री, वेरी गुड, ओके, सामग्री, यस, तो जो सामग्री आप डाल रहे हो उसके अंदर, तो वो अब देखो तो सही कि अब कौन सी सामग्री तुम इन सारी की सारी कहानियों में डाल रहे हो. एंड मणि गिव्स मी अ फ्यू चॉइसेस कि तुमने अपनी इन कहानियों के अंदर क्या क्या डाला. वरी और फन, तुमने उनके अंदर चिंता डाली या मस्ती डाली. लैक और फन, तुमने उनमें अभाव डाला या मस्ती डाली. डाउट और फन, इन कहानियों में, ये जो ऊपर इतनी कहानियां हुई उनमें तुमने शक डाला, संदेह डाला या फन डाला. मिसट्रस्ट और फेथ, क्योंकि ये मेरी कहानियां ज्यादातर फन और फेथ के लिए होती हैं, तो ये मणि ने मुझे जो सजेशंस दिए उसमें बस ये फन और फेथ दोनों का ही जिक्र उन्होंने बार बार किया. मिसट्रस्ट और फेथ, कि किसी के ऊपर विश्वास या फिर आस्था. वरी और फेथ, चिंता या आस्था. डाउट और फेथ, शक या आस्था. लैक और फेथ, अभाव या आस्था. तुमने अपनी स्टोरी में क्या क्या डाला. अब हम 5 मिनट लेंगे और आप अपनी वो एक एक कहानी को देखो कि उसमें आपने क्या क्या बेसिक इंग्रेडिएंट डाला. इंग्रेडिएंट समझ गए ना? द फ्रीक्वेंसी that you feel when you look at that line, the frequency from where you wrote that line, जिस भाव के साथ आपने वो लाइन लिखी. अगर मान लो मैंने आपको बोला कि शरीर, और आपने शरीर के ऊपर ये लाइन की, अच्छा ये शरीर का मैंने ध्यान नहीं रखा, मेरे शरीर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपने ये 2 लाइनें लिखी, तो अब आप इनको बैठ के और अब इनकी फ्रीक्वेंसी को भांपिए, इनके भाव को भांपिए कि जब आप अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं और जो पहले 2 विचार 3 विचार आपके सामने आ रहे हैं, तो वो कौन से विचार हैं, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो कि आपने इस सब पे लगाई. तो आप अब एक एक लाइन करके, हमने करीब 15-20 शब्द बोले थे और आपने शायद एक दो उनके साथ कहानियां जोड़ी होंगी. आप एक एक कहानी का इमोशन देख जाइए. Every story will have the emotion attached to it. And so go back to each of those stories and now take a look at what emotion you would have written something from. If the emotion is of joy, fabulous. If the emotion is of fun, masti, oh, couldn't be more beautiful. If the emotion is of sadness, okay, wonderful. Today, you have found a story.
थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा आपको कि इन सब कहानियों में आप रोज पढ़ते हैं और रोज उनसे जूझते हैं। रोज आप कहानियों में पढ़ते हैं, रोज उनके साथ थोड़ी बहुत लड़ाई करते हैं, और उसके बाद कई सारी कहानियां जो हैं वो अब आप अवेयर होके देख जाते हैं तो थोड़ी मस्ती आ जाती है। लेकिन अगर कोई भी कहानियां अभी ऐसी हैं जहां पर मस्ती नहीं है, सो देन दिस इज द मोमेंट टू टेक अ लुक एट दो स्टोरीज। तो ये वो क्षण है जबकि आप उन कहानियों की तरफ देख रहे हैं। All these stories have so many different meanings to us, and we carry these thoughts in our subconscious. This is what comes up when we think about these topics. And so today is the day we take a look at all of the stuff, all of the gunk that we are still carrying, all of these emotions of worry and fear and sadness and anger and frustration that we are still carrying. Today is the day that we take a little bit deeper look at the stories, because the stories are outside, but the energy, that key ingredient, belongs to you. And this is the key ingredient that is so far still not been looked at. If your story talks to you about worry, then you still haven't looked at that part of the story. You're still holding on to worry. And today is the day that we can observe it a little bit more. Will we ever be done with all the stories? No. That's what fun life is, that the stories will keep getting created. But as they get created, now you will see you don't have to sit in it for 5 years. You don't have to sit in it for 5 months. You don't have to sit in it for 5 days. You can simply look at it, become aware of it. Oh, this is a story. If I can make this story, I can also make another. I can also cook another dish. I don't have to use these ingredients. I'm going to go get new ingredients. Now the emotions are very different from when I was in unawareness. How beautiful. पता चल रहा है ना? कितने ही प्यार से कि अब वो इमोशंस ही नहीं है, अब वो टॉपिक्स वो की वो ही हैं और वो इमोशन वो की वो नहीं है। इमोशंस जो हैं, आपने बैठ के खुद पे काम कर लिया तो बदल गए। आज बदले हुए हैं, कल को कभी वापस से कोई इमोशन आ जाएगा तो वापस से अवेयरनेस हो जाएगी, एंड इट विल बी डिफरेंट. We can still keep taking every emotion and experiencing the emotion, but we will experience it for a short bit and then we become aware. The game only of awareness, the game always of awareness. So today, what have we done through this tool? We have simply put our awareness to all the stories, the ingredients that we are carrying, so that now we can release those ingredients. So I'm sure कि अब तक आपने वो लिस्ट के अंदर अपने थोड़े ingredients लिख लिए होंगे. So चलिए अब उनको चेंज करने का छोटा सा काम. So बहुत क्यूट सा, इसको मेडिटेशन तो कह ही नहीं सकते ना. This is like fun stuff that is coming. Okay. So now close your eyes, take a deep breath in and release. And as you take the next deep breath in, I take energy from Meenal. I am Meenal. नई सांस के साथ मैं मीनल से ऊर्जा लेती हूँ. मैं मीनल हूँ, मैं मीनल हूँ, मैं मीनल. और एक लंबी सांस अंदर और बाहर. ओके. और अब खुद को इमेजिन करते हुए 4 साल. Imagine yourself as the 4-year-old. And now you are standing in Mani's kitchen. You are standing in Mani's kitchen. This 4-year-old is standing in Mani's kitchen. आप 4 साल के हैं और आप कहाँ खड़े हैं?
आप मणि की रसोई में खड़े हैं, उनके किचन में खड़े हैं, और मणि आपके सामने है, और मणि कहते हैं चलो आज तुम मेरे लिए कुछ पकाओ, आज तुम मेरे लिए कुछ पकाओ, चलो तुम मेन शेफ और मैं तुम्हारा शागिर्द। आज मणि आपको ये कहते हैं। मणि puts this little cap, the chef's cap, on your little head and says to you, today you cook something for me. You are the main chef and I the sous chef. So Mani is going to help you, assist you, but you are the one that's going to cook. The one that's going to cook a nice little story. So there you go. तो अब एक बड़ी सारी कढ़ाई आपने उठाई, आपसे तो क्या ही उठाई गई, आपने मणि को इशारा किया और उन्होंने वो बड़ी सारी कढ़ाई उठा के और आपके सामने रख दी और अब जला दिया उसका चूल्हा. So Mani picks up this big pot, this big vessel, because you are telling him this is the one that I want. Okay, pick it up and put it on the gas for me. So Mani picks up that big vessel for you, this big pot, and now it's on the gas. And now the first ingredient. And as you look into the kitchen, you find this big, huge bag of happiness. Huge bag of happiness. And you like the color. It's a beautiful orange color. This happiness is a beautiful orange color. You're going to like this as the main ingredient. So you make one eye at Mani. Mani picks up the bag and puts a lot of it into that pot. So आपने जाके और पहला अपना जो पदार्थ, अपनी सामग्री जो उठाई, वो कौन सी सामग्री, कौन सा इंग्रेडिएंट, गए आप और आपने देखा एक बहुत बड़े पोटले में पड़ा है, उस पे लिखा हुआ है हैप्पीनेस, खुशी, और कितना ही प्यारा रंग, एक ऑरेंज कलर का कुछ तो उसके अंदर है. तो आपने वो उठवाया मणि से बैग खुशी का और ले आए आप गैस के ऊपर और अब आपने डाल दिया एक पूरा की पूरा किलो भर के वो खुशी का पिटारा आपने अपनी कहानी में. यहाँ पे क्या पक रहा है आज पक रही है आपकी कहानी. तो इसलिए आपने डाले उसके अंदर पहले तो 1 किलो खुशी. 1 किलो खुशी के अंदर अब थोड़े मसाले और डाले जाएं. तो मसाले में क्या डालना चाहिए? मसालेदान खोल के और आपने देखा थोड़ी सी मस्ती है, ये मस्ती डाल देते हैं, मस्ती को डालते. Now you open that box filled with spices, and now you are ready to put some spices in it. And you find masti, the bliss, the fun, that's what you find. So masti goes into it, into your happiness, the happiness that's already cooking. And now you go again to the spice box. What else can we put in over there? And you see there is this one little packet over there in the corner, and that says music. It says music. Okay then, let's put some music into the dish. आपने जाके उस मसालेदान में देखा एक छोटा सा पैकेट, उस पे लिखा है संगीत. चलिए फिर ये थोड़ा सा संगीत भी डाल देते हैं. Mani is looking at you and he's very impressed. What an amazing dish you are making. And then the next one, you like this beautiful color and it's all red. It's an amazing red. You love the color. And then it says over there, anger. And then you say, yeah, I'm going to put about half a kilo of this into my dish. And so you tell Mani, half a kilo of this. And Mani says, maybe you want to reconsider this. And then you look at him and he says, tiny bit, tiny. It's a good flavoring to add, but just a little bit. And so you take 1 spoon of anger and you put in that too.
आप मणि की तरफ देख रहे और आपको एक ये बहुत ही प्यारा सा लाल रंग का मसाला नजर आया। लाल रंग का कितना ही खूबसूरत लाल रंग। और आपने मणि को देख के बोला इसका तो आधा किलो डालना चाहता हूं। और मणि ने आपकी तरफ बोला कि नहीं नहीं, शायद इसको थोड़ा सा ही, 1 चम्मच काफी है। क्योंकि उस मसाले का नाम क्या है? उस मसाले का नाम है गुस्सा। तो मणि ने बोला नहीं, इसका बस 1 चम्मच ही डाल दे तो शायद ठीक रहेगा। सो यू ऑल्सो लुक एट मणि एंड नॉड योर हेड, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर द शेफ। तो आप बात मान लेते हो अपने सू शेफ की, और उनके हिसाब से आप 1 चम्मच गुस्सा डाल देते हो उसमें। अगला क्या डाला जाए? एक बहुत ही प्यारा चमकता सा मसाला है और उस पे लिखा है नाच। नाच। अब ये तो डलना ही चाहिए। इससे तो कितने ही रंग आ रहे हैं उसके अंदर। कितना ही प्यारा गोल्डन सा कलर है उस मसाले का, तो बहुत ही खूबसूरत। तो आप मणि की तरफ देखते हो, मणि कहते हैं 1 किलो। 1 किलो। तो आप बोलते हो उनको उठाएं और ये डालते हैं हम 1 किलो नाच। तो अब now looking at the dish that we are making, you look at this beautiful spice that sits over there, and it's golden in color, and it says dance. And now you're thinking this would make the dish look so pretty. It would be so beautiful to have this golden in your dish. And so you say to Mani, 1 kilo, and Mani says yes. And so easily you just point to Mani and say, okay, 1 kilo of this in my dish I want. And now you look at this dish. It's got a kilo of happiness, a kilo of dance. It's got music in it. It's also got some anger. You are going to play around with the spices just a little bit more and put whatever you feel like putting. But here is your new story. It's your new dish that's getting ready. देख रहे हैं आप अपनी डिश को बनते हुए। अब उसमें 1 किलो तो खुशी है, 1 किलो तो नाच है, कुछ गान है, कुछ गुस्सा भी है, कुछ मस्ती है। डिश बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब आप अपनी मर्जी से उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत और डालेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी नई डिश तैयार हो रही है। ये आपके लिए है, ये कहानी आपकी है, ये व्यंजन, ये डिश आपकी है। और उसको लेकर अब देखते हैं आप मणि को, ये पक गई क्या? मणि बोले हाँ पक गई। खाने को तैयार तुम? और तुम बोले हाँ तैयार। और बहुत ही खुशी और बहुत ही नाचते हुए कि अरे आज तो मणि के किचन से क्या ही मस्त खाना खाने को मिलेगा। और अब आप जाके बैठ जाते हैं दोनों की दोनों टेबल के ऊपर अपनी इस नई डिश के साथ। The dish is cooked now, you ask Mani, and he says, yeah, looks like ready to eat. And you're so excited at this new dish that you've just prepared. It's filled with joy, it's filled with masti. This is your new dish, you've prepared it. You are the one that's going to enjoy it, every bite of it. This is your dish prepared by you. And so both you and Mani come to the table. You're sitting there, and he brings this beautiful dish to you, all decorated, all glittery from the dance that is in it. And you are ready to eat it. And Mani says, no, we can't be sitting at the table and eating it. We have to be eating it with masti and dance. This has to be eaten with masti and dance. And so the two of you get up and you put on the music, and then you are ready to dance. And so you see yourself and you're having so much fun as you are dancing and you're eating and you're enjoying and you're dancing and you are taking all of this dish in. This dish is being eaten by you. It is going into you, not to your stomach, but to your heart. This is a dish for the heart.
And so your heart is filled up now with masti and joy, unlimited dance, unlimited joy. And that's the dish that you prepared for the heart today. Eat it to your fill. This is your dish. So अब आप जाके जब टेबल पर बैठे तो मणि ने बोला नहीं, ऐसे नहीं, इस डिश को तो नाच के खाया जाएगा, इसको तो झूमते हुए मस्ती में, ये तो ऐसे खाने के लिए है। तो आप उठ के खड़े हो गए और देखो ना, आप और मणि दोनों की दोनों झूम झूम कर कितनी ही मस्ती में नाचते और गाते ये नया डिश, ये नया खाना, ये नया पकवान जो कि आपने बनाया, उसको खा रहे हैं कितनी ही मस्ती में। और आप उसको खा रहे हैं और क्या भर रहा है, ये खाना पेट के लिए नहीं था, ये तो खाना है आपके दिल के लिए। ये इसको खाने से आपका दिल भर रहा है। तो अपने दिल में आज आप क्या क्या भरे हैं, मस्ती और नाच और गाना, और इससे एकदम पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हुए, मस्ती करते हुए, और कितना ही मजा आया आपको नाचने में, और आप नाच नाच के थक गए, और अब आपको मणि ने ऐसे यूं गोद में उठाया और आपको अपनी गोद पे, यहाँ पे कांधे पे यूं सुला लिया, और आपके मुंह पर एक इतनी ही मीठी मुस्कान। मजा आ गया आज आपको ये नई डिश तैयार करने में। And now, as you get tired of dancing and still so happy, so much filled with masti, and then Mani picks you up and you are just ready to sleep. And in a minute, in a few moments, you just put your head on Mani's shoulder, and now, fast asleep, you are. So contented with the new dish that you prepared, that you ate, that you danced to. And now, happy and contented you are. That is your new energy. Your energy of joy and contentment. So beautiful. This energy of yours. कितनी ही प्यारी मेडिटेशन, और आप मस्ती में सोते हुए, और कितना ही प्यार मणि से आपको मिलते हुए, और ये डिश जो कि आज आपने खाई, बस मस्ती से भरी हुई, नाच से भरी हुई, संगीत से भरी हुई, इसी डिश को खाते रहिए और मस्ती में रहिए। Lots and lots of love to all of you. Enjoy your time. ये जो नई डिश आपने आज बनाई, समझिए कि वो जो पुराने आपने कितने ही अपने इमोशंस देखे, भावों को निकाला, उनको निकाल दिया। जब आपने उनको देख लिया तो वो निकल ही गए। आपने अभी तक उनको देखा ही नहीं था, पर अब आपने देखा कि अरे ये भी रख रखा है, अरे ये भी रख रखा है। आज आपने नया डिश बना के और बाकी उन सबको तो जाने दिया। ये तो रही आपकी नई डिश। Enjoy. Lots and lots of love to all of you. Mwah. Bye everybody. See you guys soon. See you everyone. Thank you, Meenal. Love you. Love you. Love